conversation with the writer, actor, director Tej Sisodia, whose latest shot, It's Only 47 Degrees, is truly raising the temperature. Thank you so much, Tej, for talking to us. So I just finished watching your short, and it's like very direct, simple, says what it wants to. Yet it has a layering of a subtext, beyond climate change. So what triggered the film really, and why did you feel the need to bring in the social inequality angle? So the film started with my conversation with my friend Harish Vora. He's a co-producer on the film as well. He works in the climate space. He's a climate activist, and he's doing a lot of research and working with the different policymakers and everyone. So my friendship with him has been for like 5, 6 years now. So Okay. I used to chat with him, and he used to always tell me, he used to share like what's happening in the climate space around the world, in our country, and how heat wave is, making life difficult for people in like smaller town of India and everything. And in 2024, so during the summers, temperature was hitting like almost 50 degree in most of the bigger cities. In Delhi, there were like a lot of uh, like journal workers were got heat strokes, and Yeah. in multiple cities a lot of police constable on duty got like heat stroke. So that was that this story started from there. So I thought, how as a storyteller, how I can contribute to it. I can write stories, I can create cinema, and and cinema has the biggest reach. So that's how this story came to life. Yeah, but you're saying cinema has the biggest reach, but do you think shorts also have a reach? We've been saying this for quite some time. You know how shorts have become very big, how short films have arrived. There are now a lot of film festivals. There are a lot of awards which honor short films. But do you think the ecosystem has truly shifted, or it's still a big challenge for short It filmmaking? is still the big challenge for short films, ma'am. It's hard to find people, hard to find a platform for it. And the best thing, because somehow I got the right kind of people to support me. We got like Nasir Saab on board, like Right. he was the biggest help. Then we got Civic Studios to help us, amplify the film and take it to all the platforms and everything. So at the finally, what we realized, we felt YouTube is the best place where we can showcase this film. That way, this film can reach to the right kind of audience. Like it can reach to anyone. If a farmer wants to watch this film, he can just open his phone and watch it. Finding this film on YouTube OTT is very difficult. So that was the plan. So for your question, it is still very difficult for short films to find a place in our ecosystem. But And how hard? Yes, yes, yes. Please and go on. lack of support system in the financing these kind of stories. It's very difficult. But how did you manage to convince Naseeruddin Shah, who's such a big name, of course, and how has that helped your film? So Harish and Nasir sir has like worked together for a while in the climate space, and Nasir sir has been very helpful towards Harish this. So when I wrote the film, I reached out to Harish and we sat on the story. We liked the story. Then we thought, let's make it. When it comes to let's make it, we need funds. And as an independent filmmaker, I don't have those kind of funds, so I can just go and produce it. So Hmm. we started reaching out to people. We went to some production houses, some brands, but everybody was asking, what we will get out of it, like commercials, Hmm. and we had no answers for that. Then we reached out to Nasir sir, and I would say within a day, he was like, I want to help you guys. Hmm. And then it became easy for us. He helped us with the funds for the shooting part, and then he read the script. He loved the script, and but the most nervous day for me was when he was reading the script. So I was Uh, thinking, what are you gonna say? What are you gonna say? So I was very nervous. But next day when I met him, he was very happy with the story. He said, I do not see any changes in it. Please go ahead and make it. And that's how Nasir sir has been for this project, and he's still like he's helping us wherever he can, help this film. so did he give any creative inputs apart from funding the film?
No, of course, but he's been a very because if you saw the poem at the last, Yeah, so he's of I course kind of even recited a poem. Yes, that's yeah, right. so it's his creative input only because I Yeah. suggested him. I think, sir, we should conclude the film with this poem Mm. and with the poem which talks about these people, their voice, and what's happening our country these days. And then he just called Swanand sir. Swanand Kirkire has written the Yes, poem, of course. Yeah. and he's fantastic. He wrote the poem, and Nasir sir is like, he was like, okay, I would love to narrate this, and Mm. that's how he's been very helpful for everything, and Mm. how he is like working with him. It's like he's I call him institution in himself Of for course. for a filmmaker like me, I got to learn a lot from him. Being around him, you get to observe a lot. So I'm very fortunate and grateful because he came on board. Even with the Civic Studios, when we ran out of funds after Mm. shooting, we didn't have any money, and so we reached out again to people. And then Civic Studios came. Yeah. It's a Anushka studio Shah. run by Anushka Shah. Yeah. She's fantastic. They helped us put together the entire film, Mm. and after film was done, they are taking it to multiple NGOs all over the world. It was screened at Mumbai Climate Week, London Climate Week recently, and they've been a great support with this film. Yeah, but you're saying that you were a little nervous when Nasir sir was reading your script. But was your actor Sharif Hashmi a little apprehensive when he knew that it's Nasir sir's production? No, 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 no. Sharif is a wonderful human being. Yeah. Such a fantastic actor to work with. We were working on a very shoestring budget. So, Mm. and we shot the film in a city called Raipur in Chhattisgarh. And the All kind right. Yeah. of difficulties we were shooting, and he was with us all the time. He was there with us. He was standing, under the difficulties we were shooting in, and with what happened when I suggested Sharif's name to Nasir sir, he was okay. He said he's the right choice. We should go for him, and he called him immediately, and that's how Sharif came on board. So otherwise, it gets very difficult to get right kind of people to work with in a smaller production because you need a support system which can help you. Yeah. Thanks to the family band, Sharif is a big name right now. But Yeah. tell me how important it is to have a known face in a shot. Uh, I think for the relevant film, it always helps with the visibility for sure. But yeah, because having getting a platform on board, spreading words out, that definitely help with these kind of projects. Otherwise, if you make a climate film, nobody wants to watch it. At least with the name, people like Yeah. to watch it. Then they can talk about the subject. Now everybody's talking about the subject because they thought, okay, it's a Shari Vashvi's film, let's watch it. Then they can comment about it. They're like, people are watching because nobody's gonna watch the film on my name because nobody knows me, because when you have people like Shari Hashmi, Naseeruddin Shah, Swanand Kirkire attached to it, people like to watch it, and they can comment it. Otherwise, it's very difficult to find visibility with these kind of projects. And Mr. Swanand Kirkare especially wrote it wasn't that you used an already existing poem. He especially wrote this poem for your film. Yes, yes, yeah, of course. Oh, Because we that's reached out to him, I sent him the rough cut of the film, and I think he took like few days to just wrote the poem, and Nasir sir approved it in like one go because his words are amazing. yeah. But why do you think? I mean, like, climate change is something that affects all of us. All of us complain when the temperatures, when it actually gets to 47 degrees or even worse. All of us talk about it. That's the opening line with everyone. कितनी गर्मी होगी है. लेकिन फिर भी when it comes to films or when it comes to action, none of us are ready to do anything. And what can a short film do in that space then? सो आपने देखा है कि हमारी फिल्म ना बस मैं जब ये फिल्म सोचा भी और बना भी रहा था, मेरा ये था कि जो एक्चुअली जो लोग सफर कर रहे हैं,
वो वर्किंग क्लास लोग हैं. Like Absolutely. some people can hide behind like ACs and all that thing. They can afford to be in that space. Yeah. But people who are, people like a construction worker, a rickshaw wala, a police constable, a food vendor, Traffic. a farmer, अगर वो दिन में 12 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगे तो उनके घर पे रात को उनके फूड टेबल पे फूड नहीं हाँ. होगा उनके बच्चों के लिए. सो ये फिल्म उसके बारे में कि उनकी जो वॉइसलेस है, जो उनकी आवाज, अगर हम मैं किसी को मैंने कोई कमेंट नहीं किया किसी के बारे में. मैंने फिल्म को बस इतना रखा है कि इसको एक वॉइसलेस की आवाज को कोई सुन पाए, एक उनकी जो स्ट्रगल है उसको कोई दिखा पाए, और हमने बहुत ही प्लेनली उसको दिखाया है. ना कि मैंने कोई क्लाइमेट जागरण करने की कोशिश करी हो उससे, कि मैंने Yeah. किसी स्पीच करने की कोशिश करी. मैंने जो रियलिटी है उसको सामने किया है लोगों के. तो मेरा वही पॉइंट था इस फिल्म को बनाने के पीछे. But were you ever tempted to show any solution for the problem, since one of your producers is a climate activist who would, of course, know more, far more than we as laymen know? सो आपने जब फिल्म एंड होती है ना, सो देयर Ah, इज अ there. मैसिव रिसर्च टेक्स्ट. So Yeah. that research text is like researched by Harish and supported by CEW, Sunita Narain's team. She's one of the biggest climate activists in Right. our Yeah. country. You must have seen her quote also. Yes. Yes. She took permission from her, and she's very happy with the film also. Even Civic Studios team also, research team, helped us put those slides together. So हमारा वही था. हरीश का क्या है कि हरीश बहुत अच्छे से समझता है. तो हमारे हर सिटीज में, हमारी कंट्री के जहां जहां हीट वेव्स आते हैं, हर सिटी में हीट वेव्स एक्शन प्लान नहीं है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इसेंशियल. सो हमने हर उन स्लाइड्स के बाद में लिखा है कि यू कैन आस्क योर अथॉरिटीज इन योर सिटीज, डू वी हैव लाइक एक्शन हीट एक्शन प्लान फॉर आवर सिटी. एंड वहीं से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि हम लोग अपने अथॉरिटीज से बात करें जहां जहां जिस शहरों में है, एंड हम उनसे हीट एक्शन प्लान की बात करें. अगर हम 10 शहरों में भी हम इस बात को अगर रेज कर पाए इस फिल्म के थ्रू, तो आई थिंक हमारा मिशन बिल्कुल अकम्प्लिश्ड हो जाएगा इस फिल्म को बनाने के पर लिए. पर ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज होता दिखा आपको? डिड यू गेट एनी फीडबैक दैट ओके दिस दिस फिल्म हैज लेड टू दिस चेंज? हैज समबडी और gotten back to you on that? मैं सबसे पहली बात बताता हूँ, मैं अपने आप में बहुत चेंज आया है मेरे में एज ए ह्यूमन बीइंग. Okay. देन मैं अपने आप से शुरुआत कर सकता हूँ. बिकॉज व्हेन आई वाज राइटिंग दिस स्टोरी आई ऑब्जर्व्ड लाइक पुलिस कांस्टेबल, रिक्शा वाला, एंड तो मैं अपने आप में आई बिकम मोर एम्पैथेटिक एज ए ह्यूमन बीइंग. इफ आई सी समवन सफरिंग ऑन द रोड नाउ, आई विल somehow, if I can't do much, at least I'll offer a bottle of water. Yeah. एंड मेरा यही मोटिव था कि एटलीस्ट एज ए ह्यूमन हम लोग एक दूसरे को ह्यूमन की तरह देखें. ठीक है, आज हम अफोर्ड कर सकते हैं एक एसी में बैठना, बट सामने वाला नहीं कर सकता है. तो क्यों ना हम एक एम्पैथी, एक इंसानियत जो होती है उसके नाते हम उनको कुछ, जरूरी नहीं है कि हम कुछ उन्हें थोड़ा बस सिंपैथी ऑफर कर दें, एम्पैथी ऑफर कर दें. एंड Yeah. मेरे बैकग्राउंड में मैं खुद एक फार्मर का बेटा हूँ. आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अ विलेज and I'm a Right. farmer's son. I have seen my father struggle under the extreme circumstances, जहाँ पे लू आती है, जब हीट वेव्स आती है, तो हमारे जैसे फसलों वाइप आउट हो जाते हैं. एंड किसानों के ना हर साल एक छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं जब उनकी क्रॉप पकने पे होती है, जब Right. एक क्रॉप को लेने का टाइम आता है. एंड कई बार इतना एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस आती हैं और वो ड्रीम्स आंखों के सामने से वाइप आउट हो जाते हैं लोगों के. तो ये तो मैंने पर्सनल अपनी जर्नी में भी देखा है. और मेरे फादर आज भी किसान है, मतलब अभी भी किसान करते हैं. मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ यूपी में. Okay, okay. Right. But in your movie there is a scene where this girl is sitting in a luxury air conditioned car and she's looking at Sharif Hashmi's character who's like totally exhausted by the heat. But do you think there is empathy in our look, or she's surprised, or she's just a spectator? She's just an innocent girl, who's witnessing a life. It's a two images we are seeing. We are seeing a life who's been exhausted all day, working under the sun, and दूसरी Right. तरफ एक लड़की है जो आई थिंक
एसी वाले घर में ही रहती है, एसी वाले स्कूल में गई है और एसी वाली कार से ही वापस आ रही है। उसको नहीं पता है कि जब विंडो डाउन करेगी तो बाहर कैसा फील होता है। तो उसका जो लुक है वो बहुत ही इनोसेंट है। उसकी वो उसको उसके क्वेश्चंस हैं, उसके माइंड में हजारों क्वेश्चंस हैं। वो चाहे तो उसको पूछना भी चाहती है, विंडो डाउन करके पूछे भी अंकल की हाउ कैन आई हेल्प यू, बट गिवन द सर्कमस्टांसेस वो नहीं कर पाती है। तो इट जस्ट एक इनोसेंस, और आई फील कि बच्चों के थ्रू किसी कहानी को विटनेस करना बहुत बहुत ऑनेस्ट होता है। तो उसका जो वो देख रही है वो बहुत ऑनेस्टली इंटेंटली वो देख रही है एक लाइफ को सफर करते हुए अपने आगे। तभी तो हमारी वो पोएम शुरू होती है कि एक नन्हा पौधा देख रहा एक बड़े दरख्त को कटते हुए। इट जस्ट he's looking at she's looking at a life उसके सामने क्रम्बल हो रही है। तो जस्ट टू इमेजेस ऑफ सोसाइटी में जो हमारे यहाँ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट इनजस्टिस, सो it's very visual in our film. Like many other injustices, this is also obviously One of them. And though the girl doesn't roll down the window, but through her you are conveying that we must roll down the window and offer some empathy. But tell if audiences have watched the film and any audience reaction has surprised you, and whether they have added to the film their response. So now on the YouTube, because it's out in the public, there are like hundreds of comments, talking about the issue. We want to address a lot of comments, but like we are like right now we are like kind of little like thinking how should we go about it. But the comments like has been wonderfully accepted. Like बहुत लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को एटलीस्ट वी शुड टेक अ स्टेप, एम्पैथी के बारे में बात कर रहे हैं, हीट वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो और पर्सनल लेवल पे बहुत सारे कमेंट्स मुझे लोगों के आ रहे हैं कि एक ह्यूमन स्टोरी बनाना क्लाइमेट स्पेस में बहुत मुश्किल है। तो अगर अगर और हमने हमारा शुरू से एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम कोई क्लाइमेट जागरण या हम कोई प्रीचिंग नहीं करेंगे इस कहानी के थ्रू। हम जो रियलिटी है उसके जितना क्लोज हो सकते हैं जाके काम करेंगे। तो कमेंट्स हैज बीन अमेजिंग, बट बहुत सारे कमेंट्स जो कई कमेंट्स मतलब कुछ अजीब ही नेगेटिविटी में आते हैं, तो उनको थोड़ा हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। But one that has really touched your heart, any comment that may have touched your heart? Yes, recently एक मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मतलब I just felt so someone wrote on the YouTube only. They said कि they were like crossing some traffic signal and they rolled down the window and like offered a bottle of water to someone like who was suffering. It was not a police constable, but someone they offered. Then it was so touching for me because okay, this was I wanted to say, and people kind of thinking about this in such a way is a beautiful thing for us. But is it easier to convey your thoughts through a short film or through a longer feature film format? What is the biggest creative challenge of making shorts? So, ma'am, I wanted to do this as a feature in the beginning, honestly, with this, and I'm still working on another one, and which I want to tell, because with a feature film, you have a longest reach. You can because you can genuinely create conversation around the world. Right. With shorts, the resources are limited to go out of your way to do things, and to answer your question, there are like challenges to take shots to a right places, but I feel feature has a bigger reach that way. But somehow with this film, I found a right kind of support system with me. So actually, we are taking this film as far as we can take, to the right people, to the right places, to the right conversations, because we are already doing multiple climate weeks screenings. Now NGOs we are doing, we are planning to take this to schools and universities so we can create conversations. So, and it's out on the YouTube, so anybody can watch this, comment it, and you can. We are giving liberty to all the people to take this to their small organizations to showcase. Intimate us, don't intimate us. That's okay, but we want this story to go out and people
could take something out of it. But short films, as a rule, are a stepping to for most makers. They are a stepping stone to a feature film. Do you think that's a fair enough progression, or short film makers should stick to what they are best at, making short films, or you think that distinction is very narrow in any case? At the end of the day, everything is storytelling. Absolutely, I agree with you because it's a stepping stone for people like or to be honest, I want to make bigger films. I want to make write, and I'm already writing multiple screenplays, and I've been writing for 8 9 years now, and I want to direct bigger films. Yes, and because storytelling is storytelling. If you can convey your message in 1 minute, it's enough. If you have to take 90 minutes to convey your message, it's perfect. So my I what the kind of stories I work on, I want to tell something. I want to, create something which touches your heart, which I can at least, it doesn't have to be a 10-minute short or 1 minute short or 90-minute film. It's a storytelling, it's both same. I don't see any differentiation in these things, because I feel storytelling is long, short, whatever, but it should touch your heart. That's it. But you're particularly interested in marginalized classes. Your Avni is also tackles a similar, not a climate change issue, but a similar kind of class. So Avni is about a little girl who fights for a right to education. Yeah. So these issues, ma'am, why these stories are coming to, because I have seen these stories firsthand. Like, I have witnessed thousands of Avnis, in rural villages and everywhere. Like, they are denied their right to education. Right. I have witnessed, police constable, farmers, food vendors suffer under the heat. So that's how I can tell these stories, and definitely, I'm not gonna stick to just to tell like marginalized stories and people about, but I would love to, because these are the subject which 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 are close to my heart, जो मैं मेरे खुद के हार्ट को मेल्ट करते हैं जब मैं ये कहानियां कहता हूँ. मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मुझे अपनी कहानियों में एक आम आदमी को हीरो बनते हुए देखना बहुत खुशी मिलती है. बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है. I think audiences को भी बहुत अच्छा लगता है. Audiences also root for the underdog always. But the problem is now, because creating these kind of stories, we don't have support system. because अगर नसीर साहब ऑन बोर्ड नहीं आते इस फिल्म के लिए, तो ये फिल्म नहीं बनती इतनी जल्दी. अगर बनती भी तो हम बहुत ही स्मॉल लेवल पे बना पाते. अगर वो भी होती तो उसकी रीच नहीं होती. सो अब वही है कि अब मैं बनाना तो फीचर चाहता था इस फिल्म के साथ, अगर आगे भी बनाना चाहता हूँ, बट द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम फाइंड करना बहुत बहुत मुश्किल है कि लोग आए हेल्प करें. पीपल आर नॉट लाइक, जब हम रीच आउट भी कर रहे थे इसकी फंडिंग के लिए, तो कमर्शियल्स बीच में आ जाते हैं कि अच्छा व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ इट, लाइक आरओआई क्या है. मतलब हमारे पास आरओआई देने के लिए नहीं है भाई. बट इतने सारे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स भी तो हो रहे हैं. आई मीन डोंट दे हेल्प द इकोसिस्टम इन एनी व्हिच वे? अभी भी मतलब ऐसे शॉर्ट फिल्म्स को ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते जहां से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन जो फिल्म में जितने पैसे लगते हैं उतना कमाना बहुत मुश्किल होता है शॉर्ट फिल्म्स के. फेस्टिवल्स करती हैं फिल्म, फेस्टिवल में सबमिशंस के लिए पैसे लगते हैं. ऐसे नहीं और वहां पे भी अगर लाखों शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर. अब उसमें भी सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं, एंड बहुत बहुत उसमें तुम्हारी जो कॉस्ट लगती है फिल्म की वो थोड़ी ना मिलती है. बट हाँ, रीच जरूर मिलती है. एंड हमारी ये इट्स ओनली 47 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो नेक्स्ट मंथ स्क्रीन हो रही है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में. काफी अच्छी जगह पे हो रही है, तो हम वो भी कर रहे हैं. बट कोशिश हमारी है कि हाँ, बहुत मुश्किल है अभी भी शॉर्ट फिल्म्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाना. तो मतलब पर ले दे के शॉर्ट फिल्म्स के लिए एक फिल्म फेस्टिवल्स is the best way to reach out or make your mark? Yeah, film festival and then like release it somewhere. Otherwise लोग रिलीज नहीं करते तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता. तो मैं भी अपने करीब के काफी दोस्तों को जानता हूँ जिनकी
हजारों लोगों की फिल्में मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है बंद डब्बों में, कहीं रिलीज। अभी अभी अच्छी बात क्या हो कि यूट्यूब का इतना बूम हुआ है पिछले कुछ सालों में, एंड तो अभी लाइक पीपल आर रिलीजिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो देयर इज अ मीडियम बट यू डोंट मेक एनी मनी आउट ऑफ इट। But as you're right in saying कि हजारों लोग shorts बना रहे हैं. Anyone with any filmmaking ambition starts with a short. But what would you tell these people? I think what would be your advice to aspiring filmmakers who think shorts is the only way? आई वुड से शॉर्ट्स इज नॉट द ओनली वे, बट मैं उनको एडवाइस यही करना चाहूंगा कि अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हो बिकॉज तुम पैशनेट हो तभी बना रहे हो, अदरवाइज आपको भी पता है कि उसका कुछ तुम पैसे नहीं कमाने वाले हो उससे। सो क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर योर सेल्फ। मैं यही बोलूंगा कि अपना ही एक यूट्यूब चैनल बनाओ एंड अपनी फिल्म को रिलीज करो। बना के उसको अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको क्रिएटिविटी में, आपको फिल्म मेकिंग में आगे बढ़ना है, जब तक लोग आपका काम नहीं देखेंगे आपको काम नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जाओ अपने अपना प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट करो एंड फिल्में, रेलेवेंट फिल्में बनाओ जो कि ऑडियंस को कनेक्ट करें किसी भी तरीके से, एंड गो आउट एंड मेक फिल्म्स, एंड यही तो करना है हमें। And children have also been an integral part of your films. Why so? बिकॉज आई ऑलवेज फील दे, मैं हमेशा बच्चों की आईज के थ्रू अपनी फिल्मों को देखता हूँ, और मैं जो भी Okay. अपनी फीचर्स भी लिखता हूँ ना कहीं उनमें मैं मेरा बच्चों के थ्रू पॉइंट, बिकॉज मैं मानता हूँ कि उनकी आंखों में इतना इनोसेंट, इतनी ऑनेस्टी होती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती। आप मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपने जो फाइनल शॉट हमारी फिल्म का देखा, जो शारिक को वो Right. छोटी बच्ची देख रही होती है, आप अगर मैंने वहीं पे कोई मैच्योर इंसान की आईज के थ्रू अगर मैंने उसको दिखाया होता, आपका वो कनेक्शन नहीं होता। बिकॉज आप उसको एक इनोसेंट आईज के थ्रू देख रहे थे, तो यू कुड फील दैट कि उसके और मैं मानता हूं कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते आते हैं ना, बच्चे जब 8 से 10 साल से 12 साल, फिल्टर्स आते जाते हैं लाइफ में। हाँ, ये करेक्ट. फिर हम दुनिया से मतलब झूठ बोलना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले मतलब जो चीजें आती है फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, एंड जो ऑनेस्टी एंड जो इनोसेंस होता है ना वो जाता चला जाता है, वो नहीं बचता है फिर। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं अपनी कहानियों में बच्चों को इसलिए लाता हूँ कि उनमें एक इनोसेंस, एक ऑनेस्टी, एक प्योरिटी आ पाए। So does that mean the child in you is still alive? And how in this unjust, unequal world are you able to see the world through a child's eyes? आई 100% फील कि एक बच्चा तो मेरे अंदर पूरी तरीके से जिंदा है, बिकॉज मैं अपने साथ के दोस्तों से भी बात करता हूँ कि दे से कि तू डायरेक्ट कैसे कर लेता है बच्चों को। मैं यार डायरेक्ट करना बच्चों को बहुत आसान है, तुम उनके दोस्त बन जाओ ना। यू शुड बी लाइक, अगर आप उनके दोस्त, अगर उनके एक फर्स्ट उनके उनके केयर करने वाले बन गए तो हो जाएंगे, वो बात सुनेंगे तुम्हारी। एंड हाँ, बिकॉज मेरे मेंटोर है एक दिल्ली में, दिलीप शंकर सर है उनका, जिनके थ्रू मैं ट्रेन हुआ हूँ। जब मैं मुंबई आ रहा था 2015 की बात है, तो उन्होंने कहा था कि तुम मुंबई जा रहे हो, कैसे सरवाइव करोगे, तुम भोले से हो, फंस जाओगे, मतलब तुम्हें कोई भी तुम्हारे ऊपर मतलब ऐसे चल के निकल जाएगा। बट अभी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो उन्हें लगता है अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो सरवाइव कर रहे हैं मैम, मतलब कोशिश कर रहे हैं, अब ट्राई कर रहे हैं कि अपनी जो प्योरिटी है उसको बचा के रखें। जो मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, एंड वहाँ की जो जो एक अपने आप में जो समहाउ ऑनेस्टी एंड प्योरिटी बचा के रखी है उसको कंटिन्यू करें, एंड अच्छी कहानियां कहते रहें, कोशिश है। आई डोंट नो कि तो आगे। आगे कौन सी कहानी कहना चाहेंगे? अभी मैं ऑलरेडी मैम एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ, दैट इज अबाउट इन क्लाइमेट स्पेस ओनली, बट इट्स अ ह्यूमन स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल ओनली, एंड हाउ शी फाइट्स अगेंस्ट द सिस्टम all by herself with the help of her family and father and mother. So मैं उस पे काम कर रहा हूँ अभी। द डिफिकल्ट पार्ट में हम एंटर करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, रेस फंड्स। So But that is, it is going to be a full length feature? it is going to be a full length feature. So मैं उसमें घुसने वाला हूँ अब। आई डोंट नो, वो बहुत डिसहार्टनिंग प्रोसेस होता है वो, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आई डोंट नो कि क्या होगा उसका, देखेंगे। अभी Again कोशिश inspired, करना। again inspired by something around you? 100%, 100%. Very, very close to where I'm from and what I'm seeing every day. It's Right. very, very close to the reality.
So finally, if you can recite a few lines from the Swanand Kirkire's poem, I mean, if you remember, whatever you remember for our Oh, viewers. 100%, of course. मैं बिल्कुल एक नन्हा पौधा देख रहा एक बड़े दरख्त को कटते हुए, जख्मी हाथों चली कुढ़ाली, कुछ नए घाव हैं रिश्ते हुए। एक नन्ही चिड़िया देख रही खुद अपना घरौंदा गिरते हुए, कुछ तन्हा तिनके चिल्लाते। The last word of Swanand is very, very powerful, and those are very, very close to my heart also. जिनके दिल में लालच है, उन्हीं के हाथ में ताकत है। पहले चाहे हम मिट जाएं, बारी तुम्हारी भी आएगी। जो लगी आग तो सब मिटेंगे, तुम भी चीखोगे मिटते। Right. So hope the rich and the elitist also get the message of your film. And thank you so much for your time and a pleasure talking to you. Thank you. Looking forward to more work from you. Thank you. Thank So you so much for doing this for us, and thank you so no, much. You were so thank kind. you. Thank you. You're No, so no. great.